Good evening, everyone. Can you hear me? So today we'll be having the discussion of the blood. आज हम blood की बात करेंगे. So let's start. So in the human body, how much blood is available? So answer near about 5 to 5.5 liter. हमारे शरीर में 5 से 5.5 लीटर तक लगभग ब्लड आता है. एक 70-75 किलो व्यक्ति के शरीर में इतना ब्लड होता है. 5 to 5.5 liter, right? Or little more or less. Blood is very important घटक because it's carry oxygen and CO2. ये ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है. It's carry hormones. ये hormones को कैरी करता है. You know that endocrine glands जितनी भी होती है, endocrine glands are releasing hormone in the blood. Endocrine glands अपने हार्मोन को ब्लड में ही तो छोड़ती है. उनके पास कोई डक्ट, कोई पाइपलाइन तो होती नहीं है. So endocrine glands releasing the hormones in the blood because they don't have any pipeline. So blood carrying the hormones, right? So blood play a very important role. Blood is also maintaining the body heat. हमारे शरीर की गर्मी को भी blood बना के रखता है. That's why if the person is losing the blood, body become cold. अगर एक व्यक्ति का ज्यादा blood loss हो जाए, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है. And there are lots of nutrients, there are lots of food items, there are lots of minerals, nutrients are available in blood. ये सारे हमारे ब्लड में पाए जाते. ब्लड भी. ये तो सब मैंने कुछ बातें कही है. Blood is very important because blood is also helping to fight with pathogen due to white blood cells, due to WBC. हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं. WBC के कारण हमारे शरीर की सुरक्षा तंत्र का निर्माण होता है. ब्लड इज ऑल्सो हैविंग प्लेटलेट्स. दे आर द क्लोटिंग फैक्टर्स. कि ब्लड में प्लेटलेट पाए जाते हैं जो क्लोटिंग, कहीं से ब्लीडिंग हो जाए तो उसे वो रोक देते हैं. और आरबीसी तो है ही मुख्य, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन कैरियर. Okay, so we already are aware that what is the functions of the blood. Now, if we talk about the composition of the blood is made by two parts. Number one, plasma, and number two, blood cells. हमारे ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं. एक तो होता है प्लाज्मा यानी वाटर कंटेंट, और दूसरा होता है ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो ब्लड इनसे मिलके बना है. On the one side, it's having water. On the other side, it is having RBC, WBC, and platelet. RBC are red in color, and the WBC are white in color. So blood looking red because of RBC. हमारा blood लाल दिखता है अगर उसमें RBC होते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी पाई जाती है. So blood is made by plasma and the blood cells. Plasma is water, and other than water, there are certain proteins found in the plasma. तो हमारे ब्लड में क्या होगा? ब्लड सेल्स होंगी, प्लाज्मा होगा, और प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन भी होंगे. तो ये हमारा ब्लड का निर्माण हो गया. So the many protein like sodium chloride, sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, मैग्जीन, फॉलिक एसिड, बहुत सारी चीजें हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं. राइट, फाइन. सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू few micronutrient available in the blood. So this is a very important chart I am telling you. The micronutrients available in the blood. Micronutrients available in the blood.
So here, name of nutrient, and here acupoint. So let's talk about the first. So the first I'm telling carbohydrate, second protein, and third fat. There are three main nutrients found in the blood. ये मुख्य तीन न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, protein means amino acid, and fat means fatty acids. So if the carbohydrate is breaking down, the last product will be glucose. If the protein is breaking down, the last product will be amino acid, and the fat will be breaking down, the last product will be fatty acids. So जब हम खाना खाते हैं तो हम ग्लूकोज खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, तो सारे कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। बट सपोज बिकॉज ऑफ सम रीजन, if we are suffering with some deficiency, some problem, then what to do? So the point for the carbohydrate has been told pancreas 3. That is the pancreas 3. The point of the protein has been told pancreas 1, and the point of the fat is pancreas 4. These 3 points are very much important. ये तीनों point बहुत महत्वपूर्ण है. So whenever we talk about the pancreas, pancreas is the mixed gland. Pancreas हमारे शरीर की एक mixed gland है. What is the meaning of mixed gland? That it's a combination of exocrine part and endocrine part. Exocrine part means it secretes the enzymes, and endocrine parts is secrete the hormones. तो हम जानते हैं कि पेंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है. ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है. एक्सोक्राइन का मतलब है एंजाइम बनाने वाली, और एंडोक्राइन का मतलब है हार्मोन बनाने वाली. So if we talk about the enzymes, there are mainly 3 enzymes made by the pancreas: LAT, lipase, amylase, and trypsin. Lipase is helping to digest the fat. Amylase digests the carbohydrate, and trypsin digests the protein. It means pancreas is helping to digest each and every thing, whether the protein or the carbohydrate or the fat. तो हमारे पेंक्रियाज के पास काफी अच्छी ताकत है, क्योंकि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों को पचाने की शक्ति रखता है. On the other side, if we talk about the endocrine part, we already know pancreas secrete insulin. Insulin is the regulator of glucose. Still, it secretes few more hormones, but right now we are not discussing them. और भी हार्मोन बनते हैं, ग्लूकेगॉन बनता है, और भी बनते हैं. But the insulin is very common hormone, and we are very much aware with that. So pancreas is the part who is connected with the digestion of fat, digestion of carbohydrate, digestion of the protein. तीनों से संबंधित है. Suppose someone is having some disturbances in the protein metabolism. अगर किसी को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की कोई डिस्टर्बेंसेस है, protein metabolism is not proper, then put the pancreas 1. Pancreas 1 means spleen 1 on the right side. Pancreas means spleen meridian on the right side. जब स्प्लीन मेरिडियन हम राइट साइड में देखते हैं तो उसे कहते हैं pancreas 1. So protein metabolism is not good, then we can stimulate the pancreas 1, right? On the other side, if the carbohydrate metabolism is not good, then we can take pancreas 3 or the spleen 3 on the right side. तो हम स्प्लीन 3 और पैंक्रियास 3 का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट के पाचन को सुधार सकते हैं. और बचा क्या? फैट. If the fat metabolism disturbed,
then we can stimulate pancreas 4. So these are the point 1, 3, 4. बहुत गजब के पॉइंट है। अभी दो, थोड़ी देर में दो भी आ जाएगा, दो भी बड़ा गजब का हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि दो को गायब क्यों कर दिया। द pancreas 2 also very wonderful point. Okay. But the 3 points, these 3 points are very good point for the product, very essential. तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर के पदार्थों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कहते हैं पोषक तत्व, पोषक तत्व यानी जरूरी तत्व जिनका हमारे खाने में होना जरूरी है। So we can tell nutrient and it's mandatory to take them for the good health, like the protein, carbohydrate and fat. So for the protein we have pancreas 1, for the carbohydrate pancreas 3, and the fat we are having pancreas 4. On the other side, if we talk about the best product of the human body, अगर हमारे शरीर की कचरा, गंदगी, best products of human body. Best product means we have to expel them out. Best product का मतलब है हमें फेंकना है उनको, जैसे कि यूरिया, जैसे कि यूरिक एसिड. Many persons are having high uric acid, जैसे कि serum creatinine. These are the best product. You need to expel them out. The point is pancreas 2. So the pancreas 2 is the very good point for the best product. Okay, ये कचरे को बाहर निकालने का बहुत ही गजब का पॉइंट है. Dr. Voll is not doing the division has been given by Dr. Voll. जो पेंक्रियाज की का राइट साइड में पेंक्रियाज होता है, ऐसा डॉक्टर बोल ने कहा. So as per the Dr. Boll, pancreas 2 is the very good and the helpful point, and with the help of this point we can initiate the process to expelling out. We can expel the unwanted toxins out from the body. हमारे शरीर से फालतू का कचरा हम बाहर निकाल सकते हैं अगर हम पेंक्रियाज 2 को स्टिमुलेट करते हैं, right? So let's see here. So look at it. So I am going to show you the root of spleen meridian, and where we are going to see the right side spleen meridian is nothing but pancreas meridian as per the classification of Dr. Boll. तो ये देखिएगा, this is the spleen meridian on the right side. So the spleen meridian on the left side is still the spleen meridian, but spleen meridian on the right side is spleen meridian right side का है, वह है हमारा pancreas. ये this is the pancreas. Pancreas meridian. And the first point is pancreas 1, which is very good for protein. The second point is for pancreas 2 or the spleen 2, which is very good for expelling the best product out, like the urea, uric acid, serum creatinine, कचरे को बाहर फेंकने वाला है. और फिर है हमारा pancreas 3. Pancreas 3 is the very good point for carbohydrate or the glucose metabolism. So definitely we are also using this point in the diabetes. Because in the diabetes we are mainly working for the carbohydrate metabolism. हम pancreas 3 का प्रयोग जरूर करेंगे. Now the pancreas 4 is the very good point for fat. So definitely we are going to use this point for the fat metabolism, for the problem of the fat. तो 4 पॉइंट दिए गए. Now regarding, let's come back to the pancreas 1. हम जानते हैं कि हमारे ब्लड का जो गाढ़ापन होता है वो प्रोटीन के कारण होता है. प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड को एक विस्कोसिटी, एक गाढ़ापन देते हैं. सो आवर ब्लड इज थिक, having good viscosity because of the protein availability in the plasma. Okay, so
We can improve the protein with the help of PN1, because without the protein, how will make the, because protein is the infrastructure of the human body. हमारे शरीर का जो पूरा हड्डियों का ढांचा है पूरा का पूरा, उस सब पूरे हमारे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सब बॉडी लटकी है, हार्ट लटका है, लिवर लटका है, लेकिन जो हमारा बेसिक ढांचा है, our basic foundation is made by protein, right? So now protein is very, very important thing. So if you are stimulating the pancreas 1, it's a wonderful point to improve the protein, and the formation of the protein is mainly happening in the liver. प्रोटीन का मुख्य रूप से निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन का मुख्य रूप से निर्माण लिवर में होता है। तो जब लिवर की डिसहार्मनी होती है तभी लोगों को प्रोटीन से संबंधित अलग अलग प्रकार की तकलीफें होती है। सो पैंक्रियाज 1 इज द वेरी गुड पॉइंट। So protein are formed mainly in liver. Right now we are not going in the discussion of the protein because protein itself is a very big topic. Okay. Right now our concern is this, then the formation of the protein happening in the liver. Remember this thing very clearly कि प्रोटीन का फॉर्मेशन लिवर में होता है. So if this is the liver, so liver is making the protein as well as, इसके साथ ही साथ लिवर और क्या बनाता है? लिवर इज मेकिंग यूरिया, लिवर इज मेकिंग यूरिक एसिड, liver is making serum creatinine. These all products made by liver and filtered by kidney. तो सोचिए, अब मान लो किसी का यूरिया बढ़ गया, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो क्या बिना लिवर के आप ठीक कर पाएंगे? उस व्यक्ति को नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट एबल टू ट्रीट फॉर द पर्सन until and unless you are activating the liver, because the good protein, urea, uric acid, creatinine, these all products, and there are many other products also made in the liver. Okay, so these are very important things we should remember. हमें इसका ख्याल रखना चाहिए. Okay, so we are talking about the blood. Blood is made by plasma and protein, and even having many other ingredients. Plus blood cell, or blood cells means RBC, WBC and platelet. तो ये ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? Who is forming the blood cells? Tell me, ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होगा? Where the production of blood cells happen? बताइए कि ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है?
कोई जगह है जहां होता है ब्लड सेल्स का निर्माण? सो द आंसर इज डेफिनेटली bone marrow. The mainly happening in the bone marrow, and the influential point of the bone marrow is gallbladder 39. So if you want to improve the blood chemistry, definitely the first one you should stimulate, that is gallbladder 39. आपको gallbladder 39 को stimulate करना होगा. So gallbladder 39 will enhance the production of the RBC, WBC and even the platelet. अगर कम है तो बढ़ा देगा और ज्यादा है तो उसे बैलेंस कर देगा. Gallbladder 39 is the influential point of bone marrow, and bone marrow is the factory of blood cell, right? ये हमारी blood cells की factory है. So if we are stimulating the gallbladder 39, so we can enhance the production of RBC, WBC as well as the platelets. Let's see the location of gallbladder 39. एक बार मैं आपको gallbladder 39 की location दिखा देता हूं. If you look at in this image, this is the location of gallbladder 39. ये हमारी gallbladder 39 की location है. From the lateral malleolus, if you go 3 chun up, we will be reaching on the gallbladder 39. अगर हम lateral malleolus से 3 चुन ऊपर चले जाते हैं तो हम gallbladder 39 पर पहुंच जाते हैं, जो हमारी bone marrow का influential point है. With the help of gallbladder 39, we can improve the RBC, WBC platelet. हम RBC, WBC platelet तीनों को बढ़ा भी सकते हैं और तीनों को घटा भी सकते हैं. कई मान लो WBC बढ़ गए, कई बार बढ़ जाते हैं. ब्लड कैंसर क्या है कि नॉर्मल WBC का काउंट होता है मैक्सिमम 11,000. The maximum count of WBC is 11,000, but WBC is becoming 50,000, 1 lakh. That is called blood cancer. So I will show you once again gallbladder 39. Let's see here. So look at in this image. This is the lateral malleolus. From here, if you go 3 chun up, this is the location of gallbladder 39. ये हमारे gallbladder 39 की location है. ये bone marrow का influential point है. So I would like to show you again in the another image, but I think you know that you are clear now, so that is enough. So gallbladder 39. Fine. So now, if I want to work individually, अगर मैं individually, if I want to improve more RBC, want to improve more RBC, अब मैं रेड ब्लड सेल्स के निर्माण को तेज करना चाहता हूं. रिमेंबर वन थिंग, राइट साइड स्प्लीन मेरिडियन and the left side spleen meridian. Left side spleen meridian is working for blood cells like the WBC, RBC and platelets. जो लेफ्ट साइड का स्प्लीन मेरिडियन है वो ब्लड सेल्स पर काम करता है. द राइट साइड स्प्लीन मेरिडियन इज called pancreas meridian, which mainly work for protein, carbohydrate and fat metabolism. जो राइट साइड का स्प्लीन मेरिडियन है, जिसे हम पैंक्रियाज मेरिडियन भी कहते हैं, वो मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म पर काम करता है और शुगर पर भी करता है, डायबिटीज पर भी करता है. So if you want to improve the RBC, go to the left side.
If you want to improve the WBC or the platelet, go to the left side. तो अगर आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में चले जाओ. And if you want to improve the protein, carbohydrate, and fat or the sugar, go to the right side, means on the pancreas meridian. So for here, go in the pancreas meridian. इसके लिए आप pancreas meridian में चले जाइए और इसके लिए आप spleen meridian में चले जाइए. Because pancreas meridian is connected with the metabolism of protein, carbs, and fat, as well as sugar. And spleen meridian is connected with the blood cells, blood chemistry. तो आपको उस तरह से चुनाव करना होगा. Now my target is improve the blood cells, right? My target to improve the red blood cells, RBC or red blood cells. So the first point will be gallbladder 39. Second point will be spleen 3. Definitely it will be on the left side because we want to work on the blood cell. तो हम spleen 3 को लगाएंगे. Spleen 3 is the very good point for improving the RBC. Dr. Voll has told this point is measurement point or the MP point. MP point of spleen. डॉक्टर बोल के अनुसार ये स्प्लीन का मेजरमेंट पॉइंट है. आप इसको लगा दो तो काम बन जाएगा. तो क्या इतना करने मात्र से काम बन जाएगा? जी नहीं. आपको इफ यू वांट टू इंप्रूव द ब्लड, सपोज इफ यू वांट टू, सम female is having too much weakness, some female is suffering with the anemia or blood loss. What need to do? Number one, improve RBC. Number two, improve vitamin B12. Number three, improve folic acid. Folic acid. If you do this, then you will able to improve the certain part. Still WBC are left, still platelets are left. But sometimes we have seen WBC are okay, platelets are okay, but hemoglobin is down. Weakness is there during the pregnancy, folic acid is down, vitamin B12 is down. तो ये तो बड़ा कॉमन है कि आजकल आरबीसी कम हो जाती है, विटामिन B12 कम हो जाता है, फॉलिक एसिड कम हो जाता है. Then what to do? So how to improve the condition? If we want to improve the anemic condition, how to improve the anemic condition? So move step by step. Number one, influential point of blood, influential point of bone marrow. The point number two is spleen 3, left side. The point of RBC, the measurement point of RBC, red blood cells को बढ़ाने वाला बिंदु. The point number 3. Now our next target will be B12, vitamin B12. Vitamin B12 is a very important ingredient. बहुत जरूरी है vitamin B12. And without the vitamin B12, we can't improve the condition. And nowadays vitamin B12 is really very commonly less. आजकल vitamin B12 कम मिलता ही है. Why?
why the vitamin B12 is weak, less. So let's see here. We are having stomach. This is the stomach. So whatever food we are eating, it's going in the stomach. जो भी हम खाना खाते हैं वो stomach में जाता है. Then after the stomach, this food is going in the duodenum. So this is the duodenum. After the duodenum, it's going in the next part of the intestine. That is called jejunum. तो duodenum के बाद ये jejunum में जाता है. And after the jejunum, it's going in the next part. That is called ileum. Okay. So duodenum, jejunum, and ileum. First duodenum, second jejunum, third ileum. These all three together are called small intestine. इन तीनों को मिलाकर कहते हैं हम small intestine. Small intestine means duodenum, jejunum, and ileum. If you want to improve the vitamin B12, then this part should be okay. This part should be very nice, perfect, especially ileum. So mainly vitamin B12 get absorbed in ileum. मुख्य रूप से विटामिन B12 हमारे इलियम में एब्जॉर्ब होता है, इलियम में. So we have seen here the duodenum, jejunum, and ileum. This is the small intestine. After that, large intestine starts. उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है. हम जो भी खाना खाते हैं पहले पेट में जाता है और फिर छोटी आंत में जाता है. छोटी आंत के तीन भाग, पहले भाग का नाम डियोडिनम, दूसरे भाग का नाम जेजुनम, तीसरे भाग का नाम इलियम. छोटी आंत सही होगी तो ही विटामिन B12 बनेगा, एब्जॉर्ब होगा. मुख्य रूप से इलियम हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने वाला मुख्य स्रोत स्थान है. So if your small intestine is good, then only vitamin B12 will be good, especially ileum, right? So no worry, let's do the treatment. Okay, let's improve them. Because our target to improve the vitamin B12, how to do that? Let's see now. So make the chart. Part of the small intestine and acupuncture point. So let's go in the reverse. I told you duodenum, jejunum, and ileum. So let's go in the reverse. Ileum first. Ileum. Okay. The last part of the small intestine, the main thing responsible for absorption of the vitamin B12. Vitamin B12 is very much necessary for RBC, red blood cells. Without vitamin B12, RBC can't perform any action. बिना विटामिन B12 के RBC कुछ नहीं कर पाएंगे.
क्योंकि उन आरबीसी का मुख्य घटक ही विटामिन B12 है, राइट। सो दिस इज द इलियम। सो नेक्स्ट जेजुनम, the middle part, jejunum, right? So we have taken like this: stomach, duodenum, then jejunum, then ileum. So first we have taken ileum, then the jejunum. Now we'll take the so we have taken number one ileum, number two jejunum we have taken. So with the jejunum, ये हमारी jejunum है. With the jejunum, let's take little part of the duodenum, this lower part, lower horizontal part of the duodenum. So jejunum plus lower horizontal part of duodenum. Okay, we have taken this. Now let's third number take the duodenum. अब तीसरे नंबर पे हमने क्या ले लिया? Duodenum ले लिया. So now we are taking this part of the duodenum, this part. Okay, the part which is going down, descending part. So duodenum, that is descending part of the duodenum. Okay, and the fourth number. The fourth number, again we are taking duodenum. Now we are taking this upper horizontal part of the duodenum. तो हमने एक एक करके तो ले लिया, उल्टा पहले इलियम लिया, फिर जेजुनम लिया, और थोड़ा सा डियोडिनम का नीचे का पार्ट ले लिया, फिर डियोडिनम का बीच का पार्ट ले लिया, डियोडिनम का ऊपर का पार्ट ले लिया. सो वी हैव डिवाइडेड द होल स्मॉल इंटेस्टाइन इन 4 parts, right? 4 parts. So if we want to improve the ileum, then the point will be SI1. Because SI means small intestine. If we want to improve the second part means jejunum, the point will be SI2, small intestine 2. If we want to improve the middle part of the duodenum, then point will be SI3. कितनी देर से आवाज नहीं आ रही? कितनी देर से, कितने मिनट से आवाज नहीं आ रही? कितने मिनट? जस्ट नाउ.
वो मैंने जो SI1 SI2 SI3 SI4 बताया वो वहां तक आ गई आवाज, वहां तक आ गई। ओके चलो ठीक, भाई फोन कर दिया करो अगर आवाज गायब हो जाए तो। एक दिन तो मैं 15 मिनट बोलता रहा, तब पता चला कि आवाज नहीं आ रही थी। सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? रेज योर थम, थम अप, थम्स अप। SI1 SI2 SI3 SI4, है ना? तो जो लोग कराटे लड़ते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत अच्छी होती है ना? यही तो मारते हैं कराटे। तो देखिए एक बार हम लोकेशन दिखा देते हैं आपको। तो अगर अब आपके, इफ यू वांट टू इंक्रीज द विटामिन B12, then do not forget small intestine and especially ileum and especially SI1. So look at this image here. SI1, SI2, SI3, SI4, SI1 for ileum, the last part of small intestine for vitamin B12. ये हमारी vitamin B12 के लिए है। SI2 is good for jejunum. SI3 is good for middle part of duodenum. SI4 is good for upper part of duodenum. ओके तो ये तो हमने कर लिया। चलो हमने पहले लगा दिया गॉल ब्लैडर 39, फिर हमने लगा दिया spleen 3 on the left side. So first we put the gallbladder 39 because it's the influential point of blood of bone marrow. Then we have improved the vitamin B12 by SI1 2 3 4, and we also put the spleen 3. Now let's come to the folic acid. Okay, पिक्चर की ड्राइंग दिखाऊं? देखिए जी, चलिए इसको देखिए, ड्राइंग को अच्छी तरह से याद कर लीजिए इसको। So now I would like to tell you folic acid. Like I told you, the vitamin B12 is getting absorbed in the ileum. Vitamin B12 हमारे इलियम में एब्जॉर्ब होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक उसी प्रकार से जब हम फॉलिक एसिड की बात करते हैं, when we talk about the folic acid, folic acid, folic acid get absorbed in duodenum and jejunum. Means the first and second part of the small intestine. यानी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही काम करना पड़ेगा मुख्य रूप से, तो चाहे फॉलिक एसिड बढ़ाना हो, चाहे आपको विटामिन B12 बढ़ाना हो, यानी मुख्य रूप से आपको ब्लड केमिस्ट्री पर काम करना हो। So folic acid is mainly absorbed in the duodenum and jejunum, right? So there are three main points for improving the folic acid. The point number one, that is small intestine 1A. This is the point number one. The point number two, small intestine 1B, 1A and 1B. And the point number three, liver 1A.
These 3 points are a very good point. They will help for folic acid. ये हमारे folic acid को improve करने में मदद करेंगे. And who will be storing who will store vitamin B12 and folic acid? कौन स्टोर करके रखेगा? So answer है liver. Liver will keep on storing. So first I would like to talk about these 3 points: Si1A, Si1B, and S liver 1A. As per the doctor board, Si1A right side is enough, but if we are stimulating bilateral, there is no problem. Right side, right? So first I would like to show you the location. Let's see here. So look at this image. A small intestine meridian. On the tip, this is Si1. And this is the joint. ये joint है. And here we are having one bone, one phalangeal bone. I told you earlier, from the middle joint, the upper point is Si1B, which is the CMP point of small intestine. हमारे मिडिल जॉइंट के ठीक ऊपर होता है Si1B, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का CMP पॉइंट कहते हैं, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट. So Si1B is taking care whole small intestine. It's a wonderful point. ये बहुत ही शानदार पॉइंट है. So this is the Si1B, but where is 1A? So let's see the 1A. So this is the middle phalanges. The lower border point is Si1V. The point on the upper border, that is Si1A. Si1A is the very good point for the area like a small intestine and the area around the small intestine. यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके आसपास का जो एरिया है, जो मीजेंट्रिक एरिया है, ये उसको ठीक करेगा Si1A, और Si1 भी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक कर देगा. Si1A will be working around in the mesentery. Si1B is working, for whole small intestine. And one more point, that is liver 1A. Liver 1A is also very important point because liver 1A is the CMP point of liver. हमारे liver का CMP point है. Let's see here. This is the middle joint. The point just upper to the middle joint, that is liver 1A. Liver 1 is the CMP point of the liver. CMP point means who will treat the entire liver meridian. So we have taken Si1A, Si1V, and the liver 1A. With the help of these 3 points,
we can treat entire liver, we can treat entire small intestine, we can treat the area around the small intestine, and we can improve the folic acid. हम इन तीन बिंदुओं की मदद से folic acid को improve कर सकते हैं. So ultimately we have seen 3 point for the carbohydrate, protein and fat. हमने तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट देखे. Then we also have seen the pancreas too for best product. फिर हमने बताया कि गंदगी, ये जितने भी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन बनते हैं लिवर में, लेकिन निकाले जाते हैं किडनी के माध्यम से. So these all are formed in the liver but expelled by the kidney. Gallbladder 39 is the main point, that is called the factory of blood cells. So now we want to improve the blood, improve the RBC, improve the vitamin B12, improve the folic acid. So gallbladder 39 is for factory, spleen 3 for RBC. Then for vitamin B12, we have to improve the ileum and even whole small intestine. So we have taken these one SI 1, 2, 3, 4, and we will improve the whole small intestine. And we'll take SI 1A, 1B and liver 1A for folic acid. तो यहां तक हमने समझ लिया. अब आगे की बात हम कल करेंगे. इतना आज के लिए काफी है. The remaining part will be discussed tomorrow. Thank you so much.